Hello, everybody. Good evening to all of you, and welcome to this session, to this webinar on getting started with RSI-based algorithmic trading strategies development using the help of ChatGPT. So, if you are not a very involved coder, or even if you are a involved coder, how you can use ChatGPT to cook up nice strategy based on the RSI technical indicator. So this session, this webinar, what we'll cover is we'll develop prompts. We'll see the power of ChatGPT, and also we'll see the shortcomings, the things that ChatGPT falls short of, and where we have to plug in our own a little bit, expertise. Sometimes a little bit, sometimes quite extensive expertise, knowledge is required. But let's say ChatGPT can help us with 95% of the stuff, and the rest 5% we do have to put in. Okay. So that is a big help. So somebody who can, just cook up complete trading system right from developing the strategy, coding for the indicator values, coding for backtesting the strategy, then optimizing the strategy to get the best parameters for the strategy, and then cooking up a live trading system, integrating it with any broking house API. In this case, we'll be looking at integrating with the Dhan trading API, both for the order placements as well as getting live data feeds, as well as historical data feeds, which will be required for backtesting and optimization. So we'll see how things we can do. So we'll take its help to first prompt it to come up with a logic for nice indicator of the RSI, and ask it to formulate complete workflow for this process, the entire process. Then I will prompt it to come up with Python codes for conducting simulated trading, then a backtesting on one or more Indian stocks. Primarily, I'll be taking the example of Nifty 50 stocks, but I'll limit it to only 4-5 stocks here. I mean, randomly from the Nifty top 50. But one can ask ChatGPT to populate the entire Nifty 50 stocks, or whatever is your universe, your basket. You can plug that in. That's up to you. Then we will see how ChatGPT, in the absence of any brokers API, can get historical data, fetch historical data for backtesting and optimization from Yahoo Finance. And then we'll see how we can integrate with the Dhan API for getting historical data for this purpose of backtesting and optimization. And we'll also prompt the ChatGPT to come up with code for optimizing the parameters, trading parameters for the strategy. And we'll also see how we can prompt it to help us write pretty sophisticated code in terms of, parallel processing stuff, so that the performance of the
system is more professional and is fast. Okay. We'll also check, we'll also prompt it to implement the entire strategy into a live trading system. So we'll do that. And that will include, sending even alerts to WhatsApp if you have subscribed to one of the APIs, which is popular, the Twilio API. If you haven't, it's okay. But we can always ask ChatGPT to at least come up with the boilerplate code for that. Okay, so we'll start with that. So what I'm going to do is we'll just have a look at a prompt for this entire thing that I just described. Okay. Now, it will be pretty interesting to know that the same prompt does not elicit the same response from ChatGPT each time you put it. The same prompt can come up with quite different answers or responses, and also the codes. So let us take a look at what is the prompt I'm going to give for this purpose. So my first task is, so we want to use it for three things. First, is backtest. Second is optimize. And third is live trade. So all these three stages I can do. Okay. So what is the prompt I've given? So first is I just asking it to develop an algorithmic trading strategy based on the RSI indicator. And I have chosen the 5-minute interval. You can choose any interval that you want. Okay. And I've also mentioned that I want it to code for the top 50 Nifty index stocks, which are listed on the NSE Stock Exchange of India. And I've also asked it to produce a detailed workflow for this entire thing, then implement the strategy in code using the Python language. And I've also mentioned that it should not use any backtesting frameworks. So there are, if you do not mention it, then Python goes on to, ChatGPT goes on to use some backtesting libraries and frameworks. Now, why I have kept this out is not all these libraries are, not all these frameworks are amenable for parallel processing. Okay. So, I mean, some of them may be tweaked, some of them, and also you may not have control on the optimization part in some cases. So I just went absolute raw Python. Okay. So that's why I specifically mentioned that do not use any Python backtesting framework. And it can also code for the indicators itself. Okay, raw Python code for calculating the values of the indicators. But I don't want that. For getting the indicator values, we'll use Python technical analysis library. So two libraries are popular, a TA and TA-lib. I have not mentioned it. If you want, you can mention. I have kept it to TA because I use TA. So although I have not mentioned it, we'll see that the ChatGPT
would generally plug into that library for calculating the indicator values. And sometimes it may happen that that ChatGPT may not come up with a code that goes for short selling. Okay, so I have mentioned that short selling is to be included. Okay, so short selling is allowed or included. Okay, you can write it that. And I also mentioned the strategy should have stop loss and take profit or target. Okay, so I mentioned it this way. Then I have also mentioned that it should have a little bit more complex logic for position sizing. And that position sizing will be risk-based, and the risk will be dynamically calculated. So what I mentioned is add risk-based position sizing and capital allocation rules, and dynamically adjust the risk based on the volatility. I have not mentioned what measure of volatility it should take. I mean, you can add, modify the prompt and add that the risk should be, the dynamic adjustment of the risk should be based on the ATR or the standard deviation of a certain period, ATR of a certain period. I have not mentioned it as of now. You can mention it something like based on the volatility as measured by the ATR. And you should also mention what should be the ATR window. Okay, here I have just left it open. So this is a very basic prompt I have mentioned. I have kept out a few details. We can pretty well add on as the this conversation progresses. Okay, and in backtesting and optimization, we want it to be as close to a realistic situation as possible. So in real situations, we have slippages and transaction costs. So some transaction costs and slippages we have told it to add when it codes up for the trades, for the similarity trades for backtesting and optimization. And I have also mentioned it that it should calculate the performance metrics like Sharpe ratio, max drawdown. You can mention any number of other performance metrics that you want. You can mention it. I just kept it to this. I specifically mentioned Sharpe ratio because I will be prompting it to optimize on Sharpe ratio. Okay, you can optimize it on other ratio. You can optimize it on Kalmar ratio or Sterling ratio. Okay, so whatever suits you or fits you, you can use. And prompted it to export all the results to CSV, and so that we can analyze the stuff, the backtesting stuff. And then I have asked it to optimize the parameters. 3 parameters I have asked it to optimize. So what are the parameters of the strategy? So we have the RSI window. That will be one strategy. One parameter. The second parameter would be the threshold, the buy threshold at which we will enter a buy trade, a long trade, and the sell threshold at which we will enter a short trade. So I have not explicitly mentioned those 2 parameters, but those are very much part of the 3 parameters of the strategy. And 2 more parameters is one is the stop loss. What is the percentage of, at which we'll have a stop loss, and
take profit or target a percentage. Okay. So I asked it to, I explicitly have asked it to only optimize on these 3 parameters, but we'll see that it optimizes all the 5 parameters. Okay. And I have asked it to optimize on a Sharpe ratio, using a Sharpe ratio. You can pretty well put any other ratio, as I mentioned, that suits you. And this is where a little bit of domain knowledge comes in. Actually, quite some involved domain knowledge would come in to put those last 2 or 3 sentences in the prompt. Okay. So one is that it should use the SciPy library for optimizing. Otherwise, what generally most systems, most users do, and even ChatGPT, and that's the reason ChatGPT also comes up with, is what is known as grid search. Grid search is a extremely rudimentary, very, very inefficient, very bad. Okay, to say that at optimization. So it's a brute force optimization method, the grid search. And if you have too many parameters, even 4 or 5 parameters to optimize, and the range of the values of these parameters is significant, then you are gone. You're done for. I mean, grid search is not going to really work. Okay, you'll just go on forever. Okay, not finding an answer. So I mentioned that it should use a nice functions, optimization functions, which are available in Python library. Like the SciPy library has the optimize class, which provides with a range of methods for optimization. Now, most of the methods of optimization are what are known as, they arrive at mostly a local optima, local minima or local maxima. But SciPy also has 2 very good optimization methods. One is called basin hopping, and other one is evolutionary differential evolution. It uses genetic optimization. And basin hopping is based on similarity tunneling. So these 2 optimization methods are very good at finding global optima, whereas all other methods struggle to find global optima in case the function that we are trying to optimize, the parameters that we are trying to optimize, provides a terrain optimization landscape, which is very complex. Okay. So I mentioned that use the SciPy library and use the differential evolution method. I can specify more details of what to use in this, but we'll see that it comes up with some code, and we can always add later on to the conversation. And I've also asked it to use parallel processing for the optimization. So what it does is, first comes up with the strategy workflow. And so what it's going to do is that first is a data preparation. And since I have asked it for the 5-minute candlestick or 5-minute interval data, so it will do stuff, write stuff for getting historical data for the 5-minute interval. And then it will calculate the indicator values. 2 indicator values is going to calculate, because one is for signal generation, the RSI. That's what we have asked it to do. The second one is we have asked it to
alter the position size as per the current volatility. Okay. And uh, current will be measured as either with ATR or standard deviation. So it will do that. We'll see that it generally would come up with the ATR as a measure of the current volatility. And then the logic that it's going to apply is that if the RSI crosses below a certain threshold level, it will issue a buy signal. If the RSI value crosses above a certain threshold value, it will uh, generate a sell signal. So if I draw it as this timeline, then the RSI varies from 0 to 100. So if the current RSI goes above a certain level, so we will short at this point, and if it goes below a certain level, we will go long. So these two thresholds, this one and this one. Now, initially we will take arbitrarily some value. Okay, let's say we say that we sell above 70 and buy below 30. Okay, but we will also learn how we can ask ChatGPT to find us best values for this. Okay, and best values for this for each stock. Okay, so it will generate signals as per that, and since we have told it to generate short signals as well, so it will do that. It will add code for stop loss and targets, and it will I have not mentioned it. You can specify that how much total capital you are going to use per trade, so you can mention those specifications as well. But here some boilerplate code it will add for that. Okay, and for simulating realistic trading scenarios for the purpose of backtesting to get good results, plausible backtest results, and also for optimization, we have asked you to add slippage and transaction costs. So it's going to hard code some slippage of 0.1%. Now, for a 5-minute candle, 0.1% slippage is very high. I mean, we agree that much slippage doesn't happen. Okay, for most liquid stocks. But you can change it. I mean, this is something which you are free to change. Okay, and also transaction costs per trade. I mean, each side it is going to take 0.05%. Okay, so 1/10 of 0.5%, and then it will generate some performance metrics and also code for optimizing the parameters. So which parameters it's going to. So okay, 10th of okay, fine, ठीक है. So हिंदी भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है. दैट्स ऑल राइट. तो ये जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया है, इसमें ये बोला है कि एक RSI बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाना है 5 मिनट के कैंडल के ऊपर. उसमें स्टॉप लॉस रहेगा, टेक प्रॉफिट रहेगा, उसमें बैक टेस्टिंग का कोड बनाना है,
और बैक टेस्टिंग के साथ उसमें ऑप्टिमाइजेशन का भी कोड बनाना है। मतलब कौन सा पैरामीटर, कौन सा विंडो, सारे ऐसे के जैसे 14 पीरियड विंडो रहता है या कुछ रहता है, तो कौन सा विंडो बेस्ट रहेगा ये निकालने के लिए अम, वो कोड, ऑप्टिमाइजेशन का कोड भी जोड़ने को बोला है इसको। और ये भी बोला है कि जो पोजीशन साइजिंग करेगा वो रिस्क बेस्ड पोजीशन साइजिंग करेगा। सो रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा, एटीआर के ऊपर, ठीक है। और डायनेमिकली वो चेंज होगा, मतलब जैसा जैसा एटीआर चेंज होगा उसी हिसाब से उस वक्त का एटीआर कैसा है उसके ऊपर बेस करके, अगर हाई रिस्क है तो उस हिसाब से अपना पोजीशन कम करेगा, ठीक है। और उसका एक फ्लो चार्ट, वर्क फ्लो, नॉट फ्लो चार्ट, वर्क फ्लो बना के देने को बोला है। तो ये जो है, I'll take the questions also as things go. 0.5%. All right. Now, इसने what it has done is, इसने पाइथन का कोड जनरेट किया है, ठीक है। So what it has done is it has generated Python code. So it has given us some libraries that we need to install. I had not mentioned in this prompt, I had not mentioned to use Dhan API. Okay. So मैंने Dhan API यूज करने का नहीं बोला था। तो अगर धन एपीआई नहीं यूज कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल डेटा का एक सोर्स रहता है याहू फाइनेंस, तो उसका एक एपीआई है, तो बाय डिफॉल्ट उसका एपीआई वो यूज करेगा। सो इसके अलावा बाकी जो ये लाइब्रेरीज हैं पाइथन के, जो भी इसको चाहिए वो पहले लाइन में उसने लिख दिया कि ये सब इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये पूरा कोड दिया है, ठीक है। ये अलग अलग सेक्शंस, सेटअप का पार्ट, लोडिंग डेटा। ना लोडिंग डेटा में ये जो कोड दिया है, एक्चुअली ये कोड थोड़ा गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि याहू फाइनेंस का जो लाइब्रेरी है वो चेंज हुआ है, वाई 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 फाइनेंस लाइब्रेरी चेंज हुआ है, एंड चैट जीपीटी के पास लेटेस्ट जो फॉर्मेट है उसका नहीं है, तो थोड़ा गड़बड़ करता है। बट जो लोग इसमें थोड़ा सा जानते हैं वो लोग थोड़ा इसमें कोड में चेंज करके वो कर सकते हैं। सो विल, हम लोग वो भी देखेंगे। सो विल सी दैट ChatGPT has an issue with using the Y finance, and one has to change a bit the code here. Okay. उसके बाद स्ट्रैटेजी का लॉजिक, जहाँ पे वो जनरेट करेगा पूरा ट्रेड्स फॉर बैक टेस्टिंग। ओके, सो दिस includes the code for generating the trades for simulated trading or back testing. Okay. Then उसके बाद we have these functions it has generated for calculating the performance metrics, मतलब स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म किया है उसका जो माप है। तो बहुत सारे रेशियो से हम मापते हैं। तो मैंने बोला कि शार्प रेशियो यूज करना, मैक्स ड्रॉडाउन कैलकुलेट करना। सो ये सब दो तीन चीजें जो बोले हैं तो वो कैलकुलेट करेगा, और जो भी रिजल्ट्स हैं वो एक सीएसवी में, सीएसवी फाइल में एक्सपोर्ट करेगा। सो इट विल एक्सपोर्ट इट टू CSV files, whatever results it throws up the code. Okay. Now if you just notice that I had already mentioned that use the SciPy library celebration. मैंने इसको बोला था कि ये वाला मेथड यूज करना फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। बट पहला जो सेट ऑफ कोड्स इसमें लिखा है उसमें इसने जनरेट नहीं किया। बट हर बार ऐसा होगा नहीं है, अलग अलग टाइम, एवरी टाइम चैट जीपीटी रिस्पॉन्ड्स विथ अ लिटिल बिट डिफरेंट आंसर। ओके,
सो फिर इसने बोला कि ओके इन नेक्स्ट शॉट इट विल एड पैरेलल ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग डिफरेंशियल इवैल्यूएशन. और it has asked me whether it should proceed with the optimization. I just said yes, and then it produced this entire code. Okay, only for optimization. ऑप्टिमाइजेशन सेटअप का कोड इसमें डाल दिया. अच्छा, मैंने बोला था कि आई हैड सेड दैट 50 स्टॉक्स का करना है, ठीक है, निफ्टी 50 का. सो ऑल स्टॉक्स के लिए बैच ऑप्टिमाइजेशन इसने ऐड कर दिया. आई मीन एवरी स्टॉक, हर एक स्टॉक के लिए ये ऑप्टिमाइज करेगा बेस्ट पैरामीटर. मतलब वो आरएसआई का विंडो कौन सा लेना है, कितने आरएसआई वैल्यू पे शॉर्ट करना है, कितने आरएसआई वैल्यू पे लॉन्ग जाना है. ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं बेस्ट पैरामीटर वो फाइंड करेगा. ठीक है, और फिर इसने पूछा, इट हैज आस्क्ड दैट शुड इट collate all the code and put it in one file. I said yes. So it has generated one file. Okay, RSI strategy optimization dot py. मैंने उसको लिया. अब इसमें कुछ कुछ चीजें हमको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एज आई मेंशन, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 100% कोड एकदम प्लग एंड प्ले हो जाता है. नहीं, थोड़ा सा हमको इसमें चेंज करना पड़ता है, कहीं कहीं उसकी गड़बड़ियां रहती है. अच्छा, जैसे ये वाला फंक्शन जहां पे वो याहू फाइनेंस से डेटा डाउनलोड करता है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको ठीक करना होता है. अगर हम धन एपीआई का यूज करेंगे, उसमें भी मैंने नोटिस किया है कि एपीआई का जो वर्जन यूज कर रहा है वो पुराना वर्जन यूज कर रहा है चैट जीपीटी. इसलिए थोड़ा सा कोड हमको चेंज करना पड़ा है. वी हैव टू चेंज द कोड एज पर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ अ particular API. If the API has changed very recently, then ChatGPT is not able to give you the correct one. Okay. So कुछ कुछ चीजें चेंज की है मैंने. तो ये वाला जो कोड है, ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, इसमें क्या क्या चीजें हैं, वी विल हैव अ लुक. सो विल हैव अ लुक एट ये क्या क्या इसमें है. ठीक है, तो मैं याहू फाइनेंस वाला वर्जन नहीं देख रहा हूं. ठीक है, हम लोग धन एपीआई का यूज करने को बोले इसको. सो आई स्किप द कोड दैट इट हैज जनरेटेड फॉर using Yahoo Finance. Okay, and later on I have asked it specifically कि use the Dhan Python API client Dhan HQ to get historical data, क्योंकि इस कोड में उसने Yahoo Finance यूज किया था. So I told it to use the Dhan API, and it generated a code. Okay, and of course in the code you have to plug in your API details. Okay, the client ID and access token. Dhan has a very nice API setup, very smooth API setup. Just need to give your client ID and the access token, and you are done. बहुत बढ़िया, nice easy API setting. Okay. So देखते हैं क्या क्या पार्ट है इस कोड में. अच्छा, उसके पहले एक बात देख लेता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन किसी ने किया है, सो आई जस्ट आंसर इट बिफोर आई प्रोसीड. 05%.
Okay, so I'll take one question from Saurav Agarwal. Uh, Saurav has asked कि how is it different from using any algo platform? Um, Algo platforms would actually use lot of these codes. You can think about it. Okay. Thing is, then an algo platform, you have to share your लॉजिक. ओके, जो भी आपका लॉजिक है आप उसको बता देते हो, उस पर डाल देते हो, वो आपके पास नहीं रहता है, वो एल्गो प्लेटफॉर्म पे जाता है. ठीक है. सो एक तो बहुत सारे ट्रेडर्स वो प्रेफर नहीं करते कि अपना क्या कहते हैं लॉजिक डिस्क्लोज करने को. तो अगर ऐसा है आपका कि भाई आपने कुछ यू हैव सम आईपी, आपने कुछ बढ़िया स्ट्रैटेजी डेवलप किया है, उसको आपको कोड करना है, आपका दिमाग में है कुछ आइडिया बढ़िया सा, कोड करना है, कोड करने आपको मिल नहीं रहा है, आप किसी को देना नहीं चाहते. ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपना आइडिया तो है, कोडिंग नहीं जानते हो, शेयर नहीं करना चाहते, तो फिर क्या करें. एक तो वो है. ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप करोगे क्या, आप इसका हेल्प ले सकते हो टू डेवलप मेजर पार्ट ऑफ द कोड. ओके, एंड देन रन इट योरसेल्फ. ठीक है. सो एक तो वो है. एक चीज और होता है कि एल्गो प्लेटफॉर्म में ये हो सकता है कि उस प्लेटफॉर्म में कुछ अगर प्रॉब्लम है, मान लो लेटेंसी का इशू है या कुछ है, तो आपको इफेक्ट करता है. इसमें आप खुद अपनी मर्जी के मालिक हो. सो यू ओन द एंटायर कोड, यू ओन द एंटायर सेटअप, you run it wherever you want to run it. If you have good setup, you do not have to suffer from the platforms bottlenecks and all that. So I can go on, I can discuss a lot about these. Okay, so I'll answer lots of these questions later. Okay, so uh, Sam has asked, can we backtest option buying strategy? Yes, of course we can. You can backtest anything. You can prompt ChatGPT to come up with code for धीरे धीरे कर सकते हैं. Okay, and yes, actually Saurabh, that's why I have shifted to Saurabh has asked that since we are live on Dhan, we will be using Dhan API, and that's what I'll be doing here. Okay, so I have prompted it here, as I said, I have prompted it here that use the Dhan API for historical data also. Okay, and that's what the code over here is. Okay, and yes, Saurabh will be sharing everything, the prompt. We'll be sharing all prompts, शेयर करेंगे prompts, but याद रखना प्रॉम्प्ट सेम भी होगा ना, आपका कोड हर बार चैट जीपीटी सेम नहीं देगा, क्योंकि उसका वो प्रोबेबिलिस्टिक होता है ये एलएलएम्स. ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता है. ठीक है, वो ठीक करना पड़ता है फिर देख के. अच्छा, 95% तो आपको मिल जाता है, इतना हेल्प हो जाता है एक दिन में. ये पूरा कोड अगर किसी प्रोग्रामर से करना बनाओ, ये तो पूरा महीने भर का कोडिंग है. ठीक है, वो एक दिन में हो जाता है आपका. ठीक है, एक दिन भी नहीं लगता एक्चुअली. ठीक है, ओके फाइन. So let's have a look at what it does. So one thing that the standard code that it had generated, जो स्टैंडर्ड कोड इसने धन का एपीआई का दिया था, इसमें उसमें इसने पुराना एपीआई यूज किया था, तो सिक्योरिटीज का लिस्ट और सिक्योरिटीज के आईडीज वो जो है गलत एपीआई फंक्शन कॉल किया था. तो उसको हम देख के, मैंने देख के उसको ठीक किया. ठीक है, और इसको बोला कि एडिशनल प्रॉम्प्ट्स है नीचे, नीचे एडिशनल प्रॉम्प्ट्स मैंने दिए हैं इसको. इसको बोला कि मास्टर लिस्ट डाउनलोड कर लो. सो आई हैव प्रॉम्प्टेड इट फर्दर दैट ऐड फंक्शन टू डाउनलोड द धन सिक्योरिटीज लिस्ट फाइल in a CSV format.
and modify the entire code of this fetch security ID, which gives you the security ID. हर security का एक ID होता है. आपको अगर लाइव ट्रेड फायर करना है या फिर आपको डेटा लाना है तो वो आपको सिक्योरिटी आईडी चाहिए होता है. और वो जो है हर एक ब्रोकिंग हाउस का अपना होता है, धन का अपना एक है फॉर्मेट फॉर एवरी सिक्योरिटी. सो वो फेच करने के लिए ये जो है एक गलत एपीआई कॉल कर रहा था पहले चैट जीपीटी. सो मैंने बोला उसको छोड़ो. व्हाट यू डू इज डाउनलोड द एंटायर लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, द मास्टर्स फाइल, and then read the security IDs from there. Okay, so it has updated the code, and that's what it does. So first is downloading the masters file. Okay, so this is the function. It gave me download the masters file and save it in a CSV. ठीक है. अच्छा, जब आप कोई भी रिलायंस हो या इन्फी हो या कोई भी स्टॉक का ऑर्डर फायर करना चाहते हो, या फिर यू वांट टू फायर द ऑर्डर और प्लेस द ऑर्डर और get data, fetch data or anything, you need the security ID. Okay, the code, the instrument code. Okay. Now, for that, there is this function it has given. Now, this function, I have changed it a bit. Why? Because this row, this particular code, what ChatGPT had done was a little bit wrong. Okay. So I know what the master's file look like. Okay. So the master's file that it downloads, it saves in a CSV format. So I know what are the column names and what I have filter on. So I have appropriately modified the code here. Okay. So little bit, थोड़ा बहुत हमको change करना पड़ता है. Little bit modification we have to do. Okay. Then this function I changed entirely. ChatGPT had given this code. I changed it a bit because ChatGPT was calling an old old API function. I changed it entirely. So this is the new version that we have got. Then load data, loads historical data. Okay, this will load historical data from Dhan. Now, this function call also, earlier, what ChatGPT had given was an old version. So I looked up the API documentation. API documentation देखा ये धन का और नया जो फंक्शन यूज हो रहा है वो कर दिया. ठीक है. अच्छा, कुछ कुछ जगह पे ये देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है. ठीक है. अच्छा, बाकी रहने दिया. ये है मेन स्ट्रैटेजी का कोड. स्ट्रैटेजी जो है ना, दिस विल जनरेट सीरीज ऑफ सिमुलेटेड ट्रेड्स. सो व्हेन वी डू बैक टेस्टिंग, हम लोग जो बैक टेस्टिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुराना पास्ट डेटा लेते हैं, हिस्टोरिकल डेटा. वी टेक हिस्टोरिकल डेटा एंड देन simulate what would have happened if we had traded. Okay, so पास्ट डेटा लेके हम लोग आर्टिफिशियल ट्रेड करते हैं पुराना डेटा पे. ठीक है ना. दैट इज व्हाट बैक टेस्टिंग इज. तो ये उसका कोड है. ठीक है. जनरेट कर दिया. इसमें एक्चुअली कुछ खास चेंज करने का जरूरत मेरे को पड़ा नहीं. ठीक है. I didn't need to change much here. Okay. And see that it has taken care of slippage. Okay. So यहाँ पे आप देखो, it has taken a transaction cost of 0.05%, slippage of 0.1%. Actually, for a 5-minute candle, 0.1% बहुत ज्यादा स्लिपेज है. इससे भी हम कम ले सकते हैं. ठीक है, इतना ले सकते हैं, पर मैं चेंज नहीं कर रहा हूं ये वाला, क्योंकि अगर थोड़ा स्लिपेज, अगर ज्यादा हम बैक टेस्टिंग में कैलकुलेट करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है. ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में परफॉर्मेंस इससे बेटर होगा. अच्छा, सो दिस कोड,
Next, it has generated code for calculating all the performance metrics. It has जो भी शार्प रेशियो या मैक्स ड्रॉडाउन या जो भी कैलकुलेट करना है इसको, उसका कोड इसने जनरेट कर दिया है। ठीक है, इसमें मेरे को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा। सो आई डिड नीड टू चेंज एनीथिंग हियर। देन सेव ऑल द रिजल्ट्स, उसके लिए कोड जनरेट कर दिया। अभी ये पार्ट जो है, यहां पे आता है ऑप्टिमाइजेशन का। तो ये इसने ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जो चाहिए वो कोड जनरेट किया है। ठीक है, अच्छा, ये भी डिफाइन कर रहा है कि ये 5 चीजों पे ऑप्टिमाइज कर रहा है। आरएसआई पीरियड, मतलब should I take 14 period RSI, 9 period RSI, 11 period RSI, or what is the best? Okay, so it will optimize that, find out what is the best. तो 5 और 30 के बीच पे ये ट्राई करेगा। ठीक है, आरएसआई पीरियड कौन सा लेना चाहिए, और कितने लेवल के नीचे बाई करूं, कितने आरएसआई के नीचे बाई करूं। सो बिलो व्हाट आरएसआई I will consider it as oversold and go for long trade. That also we can find out. Okay, what is the best value? Is it 10, 30, 40, 35, what? Okay, similarly, above which I will sell, go short. Okay, and what is the best stop loss or take profit? Should I have a 1% stop loss and 2% profit? 5 minute candle man, that will not be a very good option. Okay, so what is the best? सबसे बढ़िया क्या रहेगा? So ये सब फाइंड आउट करने के लिए ये फंक्शन इसने दिया है। ठीक है, नाउ यहां पे एक्चुअली थोड़ा सा एक्सपर्टाइज आया है। ठीक है, एक्सपर्टाइज काम में आया है जो प्रॉम्प्ट दे रहा है, मतलब मैंने प्रॉम्प्ट दिया तो मेरा, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंशियल इवोल्यूशन यूज करना। क्यों? क्योंकि बाकी जो मेथड्स है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है, सो आई हैव यूज्ड a particular, I have told ChatGPT to use a particular optimization method because other methods do not provide good results. Okay, so I have to have the knowledge. So चाहे कितना भी चैट जीपीटी यूज कर लो, वो आपको 95% तक तो ले जाएगा या 98% तक ले जाएगा, वो 2% या फिर शायद कभी 90% तक ले जाए, बाकी यू नीड सम नॉलेज, बट दैट वो बहुत हेल्प होता है, दैट हेल्प्स अट ऑल आउट इफ यू गेट 90% ऑफ द कोड और 95% ऑफ द कोड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है मेन फंक्शन। इसमें सारे के सारे जितने भी मैंने लिस्ट में दिए हैं, यहाँ पे एक्चुअली इसी ने जनरेट किए हैं सारे के सारे लिस्ट, जो 50 स्टॉक्स हैं उनका नाम नहीं है, आप इस पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, कर दो सारे के सारे सिंबल्स। तो जितने भी सिंबल्स उस लिस्ट में हैं, हर एक को जो है बैक टेस्ट करेगा और ऑप्टिमाइज भी करेगा। सो इट विल गो थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड देयर, डू अ बैक टेस्ट ऑन ऑल दीज स्टॉक्स and also find the best values for all these parameters for all the stocks. Okay, now a few things here. It has also added a code so that all the stocks are executed parallelly. So if you have only one CPU with 4 cores, generally only one core will be used, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, बैक टेस्ट करने में भी टाइम ज्यादा लगेगा, ऑप्टिमाइज करने में भी टाइम तो बहुत ही ज्यादा लगेगा। सो यू कैन यूज मोर कोर्स, सो उसके लिए पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा डोमेन आ जाता है, एक्सपर्टाइज, वेयर आई हैव मेंशन दिस लाइन। ओके, actually I have not mentioned, I mean this ChatGPT has mentioned because I have told it to use um, multi-processing for optimization, so it has added this. Okay, now um, okay, let me see if I have any other questions that I can take before I proceed. All right.
So this I'm going to run and show this particular one. इसमें एक्चुअली मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग थोड़ा सा हटा दिया है सो दैट आई कैन शो हाउ द कोड गोज ओके एंड it has also generated here बैक टेस्टिंग हो गया, बाकी सब हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया. उसके बाद मैंने इसको प्रॉम्प्ट किया. आई प्रॉम्प्टेड इट implement a version with real time data alerts. So whenever a signal is generated and a trade is taken, an alert will go to your WhatsApp. Okay. And it will also fire a order into the live market. So I have prompted it to do that. Implement a version with real time data alerts and live execution with the Dhan broker API. Okay. And I have also mentioned that I already have a Dhan API key and the other one, the token. Okay. So I mentioned it. Otherwise, it will just ask whether you have it or not. But anyway, I mentioned it. And I also mentioned that I want to send alerts via WhatsApp using the Twilio API. And also I have a Twilio account with all the necessary credentials. And I also mentioned that I want all the logging, all the trades and everything to be logged, each order to be logged into CSV file. And I told it that I want to trade a list of the top 50 Nifty index stocks. And I told it the signal will be on a 5-minute interval. And I have asked it to use 20% of the capital. And I told it that my total capital is 10 lakh. Okay. And I've also mentioned that on any one stock, take only one open trade. Okay. So if you get a signal on any one stock, किसी एक स्टॉक पे अगर सिग्नल आया है तो उस पे एक आपने ट्रेड डाल दिया, तो जब तक वो ट्रेड चल रहा है उस पे दोबारा और ट्रेड नहीं लेना, किसी और स्टॉक के लिए वेट करना. ठीक है. सो ये मैंने मेंशन कर दिया है. सो ये सब मेंशन करने के बाद उसने एक कोड जनरेट किया. उसने एक्चुअली उसने पूछा थोड़ा और चीजें पूछा कि फुल कोड जनरेट करना है और जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के वैल्यूज को प्लेस होल्डर कुछ रख के करना है या नहीं. सो आई सेड जस्ट generate it with some placeholder code. Okay. So it generated the code. It has coded for everything. Sending alerts, सिक्योरिटी कोड तो ठीक है, वो तो सब ठीक है. इंडिकेटर वैल्यूज कैलकुलेट करना, ऑर्डर प्लेस करना, ट्रेड को लॉक करना, और ये है मेन पार्ट जहां पे ये स्ट्रैटेजी का सिग्नल जनरेट होता है, सिग्नल एंड ट्रेड. ओके. नाउ you can also prompt it further to use the WebSocket, okay, to fetch WebSocket data. And in fact, there is a version that I had prompted it, and I have also got that also, where it has generated a code for using WebSocket streaming data for taking the parameters. I mean, taking the trades, okay, getting the signals and all. सो इसमें से कुछ अभी रन करके देखते हैं. ठीक है. ये नॉन पैरेलल वर्जन है हम लोग ऑप्टिमाइज करने के लिए. ठीक है. और इसमें मैं एक काम करता हूं, इसमें केवल एक स्टॉक को रन करके देखते हैं. उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसका बेस्ट पैरामीटर फाइंड करते हैं, उसको बैक टेस्ट करते हैं. ठीक है. अच्छा.
So I'll actually um, execute the code in debug mode. Otherwise, you'll have to wait for quite some time. It takes a little time. Okay. So I'm just executing the code in debug mode. So every line is being executed. So I have given my Dhan client ID and the access token, given the capital of 10 lakh, and 20% is to be allocated. Uh, and the securities file is there. I have mentioned the name and all that stuff. So I'm just going inside. So it is running a backtest and also optimizing. It will take a little bit time. Why? Because it uses a very advanced optimization um, algorithm. It's machine learning basically. Okay. So जो मैं कर रहा हूं वो एक्चुअली एक तरह से मशीन लर्निंग, एक तरह से नहीं, वो मशीन लर्निंग है फॉर लर्निंग द बेस्ट पैरामीटर्स। जो 5 पैरामीटर है, आरएसआई का विंडो साइज कितना लूं रिलायंस के लिए, कितने आरएसआई वैल्यू पे शॉर्ट जाना है, कितने आरएसआई वैल्यू पे लॉन्ग जाना है, स्टॉप लॉस कितना परसेंट, टेक प्रॉफिट कितना परसेंट, ये 5। ठीक है। ये ये जो है बेस्ट पॉसिबल जो है वो निकालेगा। ओके, सो आई लेट इट रन। इन द मीन टाइम क्वेश्चंस आई टेक। ओके, लेट मी सी। अच्छा, किशोर हैज आस्क्ड व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन। फाइंडिंग द बेस्ट वैल्यू ऑफ द आरएसआई विंडो साइज, कितने आरएसआई पे लॉन्ग जाना है, कितने आरएसआई पे शॉर्ट जाना है। ये जो वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, या तो फिर 70-30 का ले लेते हैं, ठीक है, रैंडमली, कि 70 के ऊपर गया या 80 के ऊपर गया तो शॉर्ट करो, और 30 के नीचे आए तो लॉन्ग कर लो। ठीक है। पर क्या वो नंबर सही है? क्या उससे बेटर हम नंबर ले सकते हैं? ये फाइंड करना, फाइंडिंग विच इज द बेस्ट वैल्यू। आरएसआई का कितना विंडो साइज लेना है, व्हाट इज द आरएसआई विंडो साइज आई शुड टेक, 9 पीरियड आरएसआई, 12 पीरियड आरएसआई, 14, 26, व्हाट। ठीक है। तो कितना पीरियड आरएसआई का जो है विंडो साइज लेना है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर माय ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सो फाइंडिंग दिस थिंग, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ये जो बेस्ट वैल्यू इन चीजों का, 5 चीजें हैं हमारे। सो हमको 5 चीजें हम यूज कर रहे हैं स्ट्रेटेजी में। एक तो आरएसआई का विंडो जनरली 14 होता है स्टैंडर्ड। पर क्या ये सही है? क्या इससे बेटर विंडो साइज यूज कर सकते हैं? फिर कितने आरएसआई के नीचे बाई करना है? ठीक है, बाई थ्रेशोल्ड, बाई लेवल, यू कॉल इट। बाई बिलो लेट्स से 30। उसी तरह शॉर्ट अबव, तो शॉर्ट लेवल 70 या 80 या कुछ। ठीक है। बट ये वैल्यूज क्या बेस्ट है? मे नॉट बी। ओके। सो इनको फाइंड करना। फिर स्टॉप लॉस का कितना होना चाहिए, कितना परसेंट।
कितना परसेंट स्टॉप लॉस, और टारगेट कितना परसेंट, स्टॉप लॉस और टारगेट कितना होना चाहिए टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज लॉसेस, ठीक है। सो इस प्रोसेस को, सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट वैल्यूज ऑफ दीज, ये जो वैल्यूज है ये तो ठीक है, पर क्या ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, पर क्या ये वैल्यूज बेस्ट है? नहीं, मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो बेस्ट वैल्यू क्या है? इफ दीज आर नॉट द बेस्ट वैल्यू देन व्हाट आर द बेस्ट वैल्यूज? तो हाउ टू फाइंड दोस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। एंड किशोर, okay, Vipul has asked, Vipul Sahai, can this be run on Google Colab? Absolutely, it can be run on Google Colab. uh, Ram Singh has asked, shall we steam the RSI value of Nifty 50 stocks with 1 hour candle? हाँ, बिल्कुल, we can do that. RSI 14 डे पीरियड कर सकते हैं, और बाकी कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा बेस्ट बेस्ट है, ठीक है। 1 आवर कैंडल हो या कोई भी कैंडल साइज हो आप लो, क्योंकि अलग अलग कैंडल साइज के लिए, हर कैंडल साइज के लिए RSI 14 मे नॉट बी द बेस्ट वन, ओके, ठीक है। तो किसके लिए कौन सा बेस्ट है ये सब निकालना, ठीक है। अच्छा, सो लेट मी सी, Venu Kumar, you have asked, can you share the code? Yeah, of course, we will share everything that is here, okay. um, Vishal, yes, yes, we will share the code. Okay. All right. Yes, actually, Prashant, you have asked, can we have a live session ka code? Yes, actually, we should have a session, webinar during the market hours when the market is on. Okay. And we can, you know, check how that code generated runs. But yaad rakhna, we have to modify certain places. Okay. And Avinash, you have asked that can you share this code, as I am not getting the same results. So Avinash, yes, actually, as I mentioned, the same prompt is not going to get you the same answers, because the way all these LLMs, whether it is ChatGPT, whether it is Grok, or whether it is Gemini, or whichever other model you use, और अब कोडिंग के लिए तो Replit है, Copilot है, so any of these, जो भी ये है, सेम प्रॉम्प्ट के लिए सेम रिस्पॉन्स हर बार नहीं जनरेट करता है, तो इधर उधर थोड़ा होता ही है, ठीक है। सो अविनाश, दैट्स व्हाट इट इज, ओके। ओके, ओके, लेट मी ऑल्सो, यस, राम सिंह, जुपिटर नोटबुक भी शेयर कर सकते हैं, इसको, इसी को कोड को उठा के जुपिटर नोटबुक डाल सकते हैं, और ठीक है, शेयर कर सकते हैं। एंड Sunil has asked, can we use this for stock options? Yes, we have to just ask, change the prompt. Okay. And okay, what else? Okay, let me see इसका क्या इधर आया. Okay, fine. So इसने कुछ तो रिजल्ट दिया है, देखते हैं. So the result is captured here. So as per the optimization method, the best RSI period it has found is 15, not 14. Okay, for Reliance. Okay, or RSI buy at 38, RSI
sell at 88, but this is a big drawdown. Okay, why? And that is specifically why I mentioned that for a 1 minute data, 1 minute candle, चैट जीपीटी ने जो ये ट्रांजैक्शन, सॉरी, ये किधर गया, ये जो लिमिट्स दिए हैं स्टॉप लॉस और टारगेट्स के, वो कुछ ज्यादा है। ठीक है, 1 मिनट या 5 मिनट कैंडल के लिए ये बहुत ज्यादा लिमिट्स है। हमको स्टॉप लॉस और टारगेट और थोड़ा टाइट करना है। ठीक है, तो ये जो इसने यूज किया है 0.5% से लेके 0.5%, दिस इज टू मच। ओके, सो इसीलिए चैट जीपीटी जो कोड जनरेट करता है उसके बाद हमको थोड़ा सा अपना अक्ल भी लगाना है। ठीक है, अच्छा, एंड achieves a very good actually sharp ratio. Okay, stop loss 3% का बोल रहा है, which actually is bad because I have told it to run between these, try between these numbers, 0.5% to 5%. Okay, जो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए 3% पे कर दिया है। तो इसको मेरे को और थोड़ा सा टाइट करना था। यहाँ पे बोलना चाहिए था कि 0.5% भी ठीक है, 0.5%, और स्टॉप लॉस का मैक्सिमम 1%, या 5 मिनट कैंडल पे 1% भी बहुत ज्यादा होता है। अ, यहाँ पे 0.5% और यहाँ पे ये, सो दैट वुड हैव गिवन मच टाइटर स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट भी थोड़ा जल्दी। ये 1% इतना, इनफैक्ट 10% प्रॉफिट के लिए वी आर सेइंग दैट चेक बिटवीन 0.5% एंड 10% प्रॉफिट नहीं। मेरे को अगर 1% प्रॉफिट आ गया चलेगा, और पॉइंट 0.5% प्रॉफिट आ गया तब भी चलेगा। ओके, इसके बीच में उसको ट्राई करने को बोलने का था। ठीक है, तो ये करके करेंगे तो शायद इससे भी बेटर रिजल्ट्स आएगा, ड्रॉडाउन और ये सब इतना ऑब्नॉक्शियस ड्रॉडाउन नहीं आएगा। तो ये एक्चुअली इट शोज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि किस तरह से हमको उसके बाद चैट जीपीटी ने बहुत कुछ कर दिया है, फटाफट ये कोड जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, इसको हार्डली इट टेक्स 15 मिनट, आधे घंटे में ये सारा का सारा कर देता है। ठीक है, पर उसके बाद हमको अपना अक्ल लगाना है। ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा थोड़ा गलत गड़बड़ टाइप का कोड आएगा। ठीक है, अच्छा, तो विन रेट 8.8 है, 80%, विच इज प्रीटी फिनोमिनल। ओके, अच्छा, सो नाउ it has also generated, let me see some metric. ये एक्चुअली काफी हाई है, पैरामीटर के हिसाब से हमको बेटर पैरामीटर्स चाहिए, और कैसे उस पर चेंज करना है मैंने डिस्कस किया। ठीक है, थोड़ा हमको अपना वो भी लगाना है। ठीक है, ट्रेड्स, क्या क्या ट्रेड लिए हैं उसका भी इसने लॉग बनाया है, बेस्ट पैरामीटर पे। पैरामीटर ऑप्टिमाइज कर लिया, उसके बाद जो बेस्ट पैरामीटर उसको मिला है उसके हिसाब से उसने ट्रेड्स जनरेट किए हैं। 5 ट्रेड जो उसने लिया है। ठीक है, एक पहला लॉन्ग ट्रेड, इतने पे एंट्री इतने पे एग्जिट, एक प्रॉफिट पे। एक और ट्रेड लिया है, ये एक स्टॉप लॉस का ट्रेड हुआ है, और बाकी ये दोनों भी प्रॉफिट पे गया है। ठीक है, सो जो बेस्ट पैरामीटर जो इसको मिला है उसके हिसाब से ये रहा है परफॉर्मेंस। ठीक है, पर इस पे बच जाना, क्योंकि
इस पे ड्रॉडाउन में काफी था, मैक्स ड्रॉडाउन। हमको मैक्स ड्रॉडाउन को टाइटन करना है, तो उसके बाद फिर हम पैरामीटर ऑप्टिमाइज करके देखेंगे कि क्या क्या बेस्ट नंबर्स है। सो हम लोग विदाउट मच नॉलेज ऑफ कोडिंग इतना तो हम कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज ऑफ कोडिंग और थोड़ा सा डोमेन का नॉलेज विल गेट अस एब्सोल्युटली परफेक्ट you know abilities to write our own trading systems. Okay, let me also read out other questions. Yes, Shiv Shankar, you have asked that stop loss take profit value will be different on different price levels as we use it in percentage terms. Yes, and ATR will be using price points. Yes, actually, uh, we have to tweak our prompts, and maybe also we can do it our own, tweaking in the code itself, or we can ask the ChatGPT to tweak the code to take care of this point. Okay, so just like as I have been interacting with this system, so on and off, I've been prompting it to modify the code, and I see what it has generated, and then I ask it to modify the code to incorporate this and that. So this is what we can do. In fact, there are some more things I have asked you to do which I have not discussed here. For example, backtesting भी है ना, and backtesting and optimization, we walk forward backtesting होना चाहिए और walk forward optimization, which is the best. So इस वाले प्रॉब्लम में मैंने नहीं किया है, छोटा कोड है, ठीक है। So lot of things we can then further prompts we can add. Okay. So this is the equity. Let me just, how many data points are there? Let me just see. A brief, quick look. Just a second. A quick look at the equity progress. Yes, Shiv Shankar, you can also mention that the uh, metric for volatility can be standard deviation, which then is always in percentage terms, irrespective of what is the price level, price point. Okay, so you can mention that as well, or you can say ATR converted into percentage of in percentage terms. So that can also be, you can prompt it so that वो प्राइस पॉइंट पे डिपेंडेंट ना हो, प्राइस लेवल पे डिपेंडेंट ना हो. Okay. Yes, yes, Venu, you have asked that can we set maximum trades limit per day? Of course, you just mention it. Okay, you just have to add whatever additional prompts you want. So you can just ask it to modify the code. Okay, modify the code and further whatever you want. That this many trades are to be taken per day. Okay, and I also want to share one code. Let me just check which it has generated.
for I had also prompted it for one single stock. Okay. And if you want to optimize on any one single stock, that is also there. I mean, it's up to you. Okay. Anyway, next question. Okay, Ram Singh has asked minimum system specifications and processor details. Yeah, this is a subjective thing in the sense it is not that if you have a 4-core machine, you will not be able to do stuff. It will just take maybe more time, but reasonable time. It's not going to be like it will take forever. No. But 8-core machine would be very good. But if you have only 4-core, no worries. Maybe it will take what will take otherwise what will take 1 hour to execute the optimization. Backtest doesn't take much time. Backtest just flies. Okay. Doesn't matter. So if you are running on let's say 50 NSE 50 stocks, each backtest should not per backtest and what is the backtest period also. So if I consider there are like 1,000 data points, so roughly 1,000 data points in terms of daily data would mean 4 years of data. And similarly, we can know what is the, for 5 minutes, how much 1,000 data points are, all that. So per stock, it should not take more than, I think, 100 milliseconds. We can time it. Okay. Just backtest. But on a 4-core. But optimization, specifically the optimization that I have used, differential evolution, it takes time. Okay. So how much time? Here I have noticed that again it depends on what is the range. I mean, everything is dependent on lots of things that you give. बहुत सारा चीजें है ना, डिपेंड करता है ये क्या क्या चीजें बता के रखा है, ठीक है, इसको उसके ऊपर डिपेंड करके चीजें होती है. तो जैसे okay, I'd also like to mention one shortcoming that this optimizer has. And in fact, all optimizers that are there in SciPy library, जितने भी optimizers हैं SciPy library में, वो एक चीज नहीं कर सकते हैं. वो ये कि इंटीजर ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते. हमारा जो RSI पीरियड होता है वो इंटीजर होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन या 14 डेज, ठीक है. सो इट्स एन इंटीजर. और जो ATR पीरियड होता है वो भी एक इंटीजर होता है. यहाँ पे एक चीज और ऑप्टिमाइज कर सकते थे. जैसे अगर मेरे को है ना इस पे एक चीज और ऑप्टिमाइज करना है, मान लो ATR पीरियड, वो भी मैं जोड़ सकता हूँ, ठीक है. तो उस हिसाब से फिर मेरा जो है कोड में मैं चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं ChatGPT को बोल सकता हूँ कि इस पे एक और ऐड कर दो. मेरे को ATR पीरियड भी वो करना है, क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइज करना है, या फिर ATR मल्टीप्लायर भी ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है. ATR मतलब पोजीशन साइजिंग करेंगे तो कितना ATR के ऊपर कितना मल्टीप्लायर लगा के करेंगे. सो वो सब भी अगर करेंगे तो और ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं. तो कितने पैरामीटर में ऑप्टिमाइज कर रहा हूं, ये सब मिला के चीजें होती है. तो हाँ, और चाहे आपके पास 4 कोर का हो, 8 कोर का हो, 16 कोर का हो, उस हिसाब से आपका टाइम ज्यादा लगेगा. पर आप उसको फिर ये कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू इज optimize lesser number of parameters, number one. Second,
जो रेंज है, चेकिंग रेंज, कि जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मैंने बोला है कि आरएसआई का जो पीरियड है ना वो 5 और 30 के बीच में देखो, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9, 10, 11, 12, 13 करके 30 तारीख, 30 पीरियड तक देखो कि कौन सा बेस्ट पीरियड है, मैंने ऐसा बोला है बेसिकली। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई हैव मेंशन, दैट इज व्हाट इट मींस। Now, if I have, let's say, slower processor or less number of cores, I'll say okay, and also I'll use some knowledge, domain knowledge, okay, sense, because आप मार्केट में हो तो कुछ कुछ तो डोमेन सेंस होता है। जैसे अगर हायर फ्रीक्वेंसी कैंडल्स है, मतलब 5 मिनट का, 10 मिनट का, या 15 या हाफ एन आवर का कैंडल है, तो RSI 14 बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, उससे कम। ठीक है, तो मैं अब बोल सकता हूं कि चलो 3 पीरियड से लेके, अगर मैं 5 मिनट के कर रहा हूं तो तीन तीन कैंडल से लेके, तीन बहुत छोटा है, ठीक है, पर ठीक है, 3 से लेके उसको टेस्ट करना है, 3 से लेके 14 तक टेस्ट करो या 15 तक टेस्ट करो। ठीक है, सो ये सब मैं वो कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, मेरा मेरे पास कितना कंप्यूट पावर है उसके ऊपर बेस करके। ठीक है, सो 4 कोर मशीन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, टाइम लगेगा पर हो जाएगा, 50 स्टॉक हो जाएगा, दिन भर में उतर जाएगा। ठीक है, और वो तो आपको एक ही बार करना है, वो तो आपको हर रोज नहीं करना है। ठीक है ना। अच्छा, वन ऑफ यू आस्क्ड कैन इट फाइंड फेक ब्रेकआउट्स। थिंग इज, एक चीज ध्यान रखना, खाली आरएसआई के ऊपर बेस करके या किसी भी कोई भी एक इंडिकेटर के ऊपर बेस करके ट्रेड करना नहीं। ठीक है, खाली एक इंडिकेटर को बेस करके करना ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो वेबिनार है, इसमें हम लोगों ने खाली ये क्या, गेटिंग स्टार्टेड, वी आर गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है ना। सो इट्स लाइक द टॉपिक इटसेल्फ इज गेटिंग स्टार्टेड विद आरएसआई बेस्ड। ये गेटिंग स्टार्टेड था, तो आप मल्टीपल इंडिकेटर भी बोल सकते हो कि यूज मल्टीपल इंडिकेटर्स। ठीक है, वो भी चैट जीपीटी को आप दो, वो करेगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करेगा। आप 6 इंडिकेटर दे दो नाम, और उसको बोलो कि ऑप्टिमाइज करके फाइंड आउट करे कि कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यस यस, वी विल शेयर द कोड, हम लोग कोड ये जितना भी है सब, जितने वर्जन है, इनफैक्ट एक्चुअली, हाँ, अच्छा, राम सिंह ने पूछा है कि व्हाट्सएप अलर्ट हाउ वी क्रिएट, प्लीज शेयर डिटेल्स। नथिंग, कुछ बहुत बड़ा पर मुश्किल नहीं है, आधा कोड तो इसने जनरेट कर ही दिया है। आपको करना यह है कि अ, थोड़ा सा महंगा है एक्चुअली ट्विलियो का एपीआई, पर आप बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस वो करोगे, बिजनेस अकाउंट, तो आपको ये मिल जाएगा, क्या कहते हैं, एपीआई कोड उसका मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो लोग व्हाट्सएप एपीआई देते हैं। ठीक है, आप उनका लेते हो, कोई भी, इंडिया में बहुत सारे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जो है ना, बहुत सारे हैं वो सस्ते में देते हैं, उनका ना गारंटी नहीं होता है कि आपने व्हाट्सएप भेजा और वो पहुंचेगा आप तक। ठीक है, आप जिस नंबर को भेज रहे हो, सो इफ यू आर सेंडिंग अ व्हाट्सएप अलर्ट टू अ पर्टिकुलर नंबर, सो मोस्ट ऑफ दीज एपीआईज आर नॉट गुड इनफ एक्चुअली, व्हाट वी हैव फाउंड। ठीक है, फॉर सेंडिंग अलर्ट्स, बट ट्विलियो इज अ वेरी गुड एपीआई, बट द प्रॉब्लम इज वेरी एक्सपेंसिव, वो इंडियन है नहीं। ठीक है, तो इंडिया में है कुछ एपीआई विच आर डिसेंट, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, उनका रजिस्टर करना है, वो आपको दे विल गिव यू दिस, जस्ट अ सेकेंड, या
they will give you these IDs. ठीक है, they will give you an ID and they will give you also WhatsApp, what is known as a WhatsApp number, sender number. If you have a business account, WhatsApp business, तो उसको करके कर सकते हो. Else what you can do is use Twilio. Twilio में अगर रजिस्टर कर रहे हो, so you can put in your again वही API कोड वगैरह इसमें डालना होता है. एंड बाकी कोड तो इसने कर ही दिया है. ठीक है, यहाँ पे आपको खाली यही करना है, ट्विलियो का अकाउंट खरीदना है और उसमें डालना है. वो आईडीज इसमें डालने हैं. ठीक है. नाउ इशू जो है वो ये है कि काफी कोड तो ये जनरेट कर देता है, पर उसके बाद भी हमको थोड़ा देखना पड़ता है. ठीक है, उसके लिए डोमेन नॉलेज थोड़ा जरूरी है. ठीक है, वो सीखना पड़ता है. ठीक है, बाकी तो ये कर देता है. राजेश हैज आस्क्ड व्हाट विल बी द एक्यूरेसी. इसकी कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, आप देख रहे हो. ठीक है, वो कुछ एक बढ़िया ही वो फाइंड किया है कॉम्बिनेशन. ठीक है, वो जो 5 पैरामीटर का, पर मुझे वो पसंद नहीं आया. रिटर्न बहुत दे रहा है, बहुत हाई रेट है, ये वगैरह वो सब सही है, पर मेरे को पसंद नहीं आया. ठीक है, आई विल ट्वीक, आई विल रीरन. ठीक है, तो उतना फिर मेरे को वो होना चाहिए कि आई विल मेंशन दैट आई डोंट वांट, यू कैन मेंशन एक्चुअली आई डोंट वांट अ ड्रॉ डाउन अबव लेट्स से व्हाट 10% ड्रॉ डाउन. ठीक है, बहुत होता है. वैसे टेक्निकल एनालिसिस पे बेस करके अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 20% भी जाता है. तो ठीक है, मैक्स ड्रॉडाउन आप बोल दो कि मेरे को 20% से ज्यादा आई डोंट वांट मैक्स ड्रॉडाउन टू बी मोर देन दिस थिंग 20%, सो दैट यू कैन मेंशन इन द प्रॉम्प्ट. ओके, ये प्रॉम्प्ट में व्हेन वी आर ऑप्टिमाइजिंग, ये ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा है कहीं कहीं. ठीक है, आई जस्ट शेयर. चलिए, ठीक है, वो सब मैंने एक जगह कलेक्ट करके रखा है, मेन मेन चीजें. तो यहाँ पे व्हेन यू आर सेइंग कि ऑप्टिमाइज, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट optimize the parameters keeping maximum drawdown less than 20%. Okay, so you can also mention this. Then what will it do is it will appropriately change the optimization code. Yeah, the optimization code that it generates. Where is it? Oh, this is the live trading. Sorry. Okay. So wherever it generates this code, it will actually uh, code up, add code so that एनी एनी पैरामीटर सेट, जो पैरामीटर सेट अच्छा रिटर्न तो दे रहा है पर ड्रॉडाउन भी जो है ना बहुत बड़ा दे रहा है, वो नहीं करेगा. ठीक है, वो बढ़िया एक और फिगर ले आएगा. शायद रिटर्न थोड़ा कम होगा, शायद नहीं होगा ही. आप रिस्क कम ले रहे हो तो रिटर्न भी जनरली ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि रिस्क कम का मतलब रिटर्न कम, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेके बहुत कम रिटर्न बनाते हैं, और बहुत कुछ लोग कम रिस्क पे थोड़ा हायर रिटर्न भी बनाते हैं. ठीक है, क्योंकि वो रिस्क रिटर्न का जो लाइन है, जो एरिया है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. बट एनीवे, तो आप मेंशन कर सकते हो. गॉट इट इन द प्रॉम्प्ट. व्हाट एल्स? ओके, यस राम सिंह. सो या तो फिर वीडियो का
API providers. Okay, just plug in those numbers and that's it. Okay. हाँ, ध्यान रखना कि कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए होगा एज पर, क्योंकि ये इवॉल्व करता है, ठीक है, दी एपीआईज, खासतौर पे व्हाट्सएप का। इफ इट इज नॉन इनिशिएटेड, आई मीन इफ इट इज इनिशिएटेड फ्रॉम दी एपीआई, एनी कन्वर्सेशन, इट हैज टू बी फ्रॉम ए इन ए टेम्पलेट फॉर्म। एक टेम्पलेट भी बनाना होता है वो, देयर कैन बी एन एंटायरली डिफरेंट सेशन फॉर दैट, वो किस तरह से ये सब किया जाता है। ओके, yeah, I mean, Krishna, you have asked why not Telegram or Discord. You can just ask it. I mean, you can change the prompt. You can change the prompt. I wanted it on WhatsApp, so I told it to send alerts on WhatsApp. You want it on Telegram, no problem. Just tell it, and accordingly, it will do some changes in the code, and rest you have to actually also, wherever little bit changes need to be done, you have to do it. Okay, and yes, Ashish, you have asked ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हाँ, मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, जब मैंने खाली बोला है कि स्टॉप लॉस और टारगेट ऑफ स्टॉप लॉस, उसको एक और वी कुड हैव जस्ट मेंशन वन मोर प्रॉम्प्ट, उस पे यहाँ यहीं पे जस्ट लिखना होता है कि अपने को, आई शुड हैव मेंशन हियर, वेयर इज इट, आई हैव मेंशन इन द स्ट्रेटजी लॉस शुड यूज स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड ये कैपिटल और स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चाहे कैपिटल में दो स्मॉल में दो, डजेंट मैटर। ओके, बट एनीवे मैंने कर दिया, ठीक। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यू शुड हैव स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन कि टेक पार्शियल प्रॉफिट भी अगर करना है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, सो वो दैट यू कैन मेंशन। देन if it is like partial profit booking, then how much of the trade is to be covered for, this is a starting point. You can go on prompting it to change further. Okay, what else? So Shiv Shankar, uh, I think I have answered your question. ATR in percentage terms can be one solution. You can ask it that everything should be in percentage terms, or use standard deviation, which is anyway in percentage terms for the volatility. Yeah, Shubhajit, commodities market is open now, but actually this code we have to change for that. Okay, so we don't have that much time today. We can have a live session actually for that will be a separate webinar as a follow up. So this was the starting from scratch. Okay, so as the title suggests, starting from scratch. So we can have a follow up webinar on that. Yeah, to run that other part of the code, the live code. Okay, and yeah, what else? Okay, Sagar, you have asked that you are getting this error. TA library is missing. Just pip install TA. Okay, so just run this pip install TA. Okay, and the thing is, all right. Okay, Manisha said for optimization, at least 1 year data is needed. I'll discuss this. Okay, depends on what is the candle size you are taking. If it is a daily candle,
then 1 year is not enough. Okay. 4-5 years is minimum. Okay. 1,000 data points minimum. If it is, let's say, hourly data or whatever, intraday data, then yes. But if it's like 1 minute data, then 6 months. Okay, so it depends on what is the candle size you are considering. So for any queries on the historical data of Dhan, you can coordinate with their team, tech team. Yes, Ram Singh, we can run it on definitely on a Jupyter Notebook. And I think I have answered all these questions. Um, what else? Kotesh, you have said that I have strategy unable to link with Algo. So you can get in touch to understand what is the issue. Okay. And where you are stuck. And Shubham has asked, लाइव डेटा कैसे ले लिया जाता है, ये उसका कुछ लॉजिक और कोड दे सकते हो? हाँ, इसमें एक्चुअली धन एपीआई का लाइव डेटा का एपीआई का तो है इसमें कोड इनफैक्ट। ठीक है, सो वो ऑलरेडी हम इसमें इंक्लूड किया हुआ है। Deep Mohan, you have asked, is API access to a retail trader free of cost? I am new to this. So Deep, Dhan provides uh, API access of two kinds, if I understand it correctly, data and the trading API. So you can get in touch with them, the tech team. So which is the thing that you require? Okay. Okay, and okay. Saurav has asked, yes, share, everything will be shared, all. But just keep in mind, same prompt आप लोग डालोगे, थोड़ा सा अलग आंसर आएगा। जो मैं भी अगर दोबारा डालूंगा सेम आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ओके। Nikunj, you have asked, can we use this in other platforms? Definitely, you can. So ठीक है। अच्छा, शुभम, आपने पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू इंपोर्ट लाइव डेटा कोड? हाँ, इसमें है दिस थिंग। इधर क्या, इसका भी है। वी कैन चेंज इट, वी कैन आस्क इट टू यूज दी वेब सॉकेट। वो इसमें मैंने नहीं किया है वेब सॉकेट का, इसमें इस वाले फाइल में। बट थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज करेंगे, वी कैन गेट द कोड फॉर दैट एज वेल। ठीक है। सो एनीथिंग एल्स, एनीबडी? So I'll wrap up the session then. Thank you, Shubham.
Thank you, everybody. Good night to all of you, and all of you have a great weekend. सबको शुभ रात्रि. जय हिंद.